India has added 1.14 lakh new coronavirus cases over the last 24 hours, while deaths from COVID-19 have risen by 2,667. India's active caseload has dropped to 14.77 lakh. The daily positivity rate further declined to 5.62%. It's been less than 10% for the 13th consecutive day now. And Delhi has reported less than 400 COVID cases. The positivity rate has fallen to 0.5%, but we're out of vaccine doses in the national capital, and the government has now decided that Covaxin vaccine doses in Delhi will now only be administered to those in the 18 to 44 age group if they are due for their second dose. All private hospitals and nursing homes have been told they cannot or they are not to administer the Bharat Biotech's COVID-19 vaccine to those who are coming in for their first jab. You have to prioritize those who got their first jab and are due for their second jab. The Delhi government has run out of Covaxin stocks. Private hospitals that have them are few and far in between. It is not easily available for those who want to get their Covaxin jab in the first dose. Earlier this week, the Delhi High Court told the Aam Aadmi Party government to work out a strategy to administer Covaxin since the national capital was unable to ensure people get both doses of Covaxin within the ideal time frame. It is already time for those in the 18 to 44 age group who took the first dose of Covaxin in May when this 18 to 44 age group opened up. It's now time for them to take the second dose, and many have not been able to find a dose to take. And the other big story, the All India Institute of Medical Sciences in Delhi will start screening for clinical trials of the homegrown anti-COVID vaccine Covaxin on children. This will start from Monday, and this comes days after the AIIMS Patna started the trials on children. Experts have warned that a possible third wave could bring as much devastation as the second wave of the pandemic if enough people are not vaccinated against the virus, and that children could be its prime target. However, the vaccines available in India, that's Covaxin, Covishield and now Sputnik V, they've not been approved for use on children yet. And a day after the Delhi Chief Minister claimed that the central government has blocked the Aam Aadmi Party's plans to launch doorstep delivery of rations, the Delhi Chief Minister has accused the centre today of taking the step under the influence of what he's calling the ration mafia, which Arvind Kejriwal has said has ensured this pro-poor revolutionary scheme does not get implemented in the national capital. The tussle between Delhi government and centre over doorstep delivery of ration more bitter today, with the Delhi CM dragging in politics. लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? The scheme is going to affect 72 lakh people in Delhi who hold ration cards and receive subsidized wheat, sugar and rice each month. The Delhi government's plan is to deliver this at the doorstep of the beneficiaries. Currently, they have to visit their nearest fair price shop. The scheme was a key promise in Aam Aadmi Party's 2020 poll manifesto and was set to launch this year in March. The centre had been objecting to the scheme, citing that the Delhi government will collect additional milling, packaging and handling charges, and that goes against the National Food Security Act. The centre is also citing a litigation pending in the High Court on the issue as the reason for not allowing the scheme to go ahead. अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं,
उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। The Delhi government has accused the centre of being discriminatory. भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। Ration dealers are opposing the scheme as it will affect their livelihood, while food rights activists say the poorest are suffering in this political battle. हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हजार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हजार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती। लोग जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं जिनके पास राशन कार्ड है वो काम पर जाते हैं, तो यदि वो काम पर गए हो और राशन पीछे से आए तो क्या होगा। उसी तरह से यदि किसी को 40 किलो राशन मिलना है, 50 किलो राशन मिलना है किसी परिवार को और कम राशन आता है, 10 ही किलो मिलता है, तो वो क्या करेंगे। सिमिलरली गुणवत्ता का एक बड़ा मुद्दा है कि अगर खराब राशन आता है तो लोग क्या करें, क्या उसे रखें या वापस भेज दें। अभी तो दुकान पर यदि उन्हें बुरा राशन देने की कोशिश होती है, पुअर क्वालिटी का राशन देने की कोशिश होती है, तो लोग मना कर देते हैं लेने से। The scheme was originally called Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana, but later the term Mukhyamantri was removed due to centre's objection to it. Over a year since the scheme's announcement, yet there has been more emphasis on the politics of it than fulfilling basic needs of people. In New Delhi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV. And as the national capital has begun easing restrictions, the Haryana government has now extended the COVID virus induced restrictions in the state till the 14th of June. However, as the COVID situation has shown signs of improvement, the government has allowed the reopening of malls, restaurants and bars with strict restrictions. They say Haryana's move to ease restrictions comes a day before Delhi is to begin its unlock process. As COVID cases in the capital have continued to fall, the positivity rate has also dipped. And Maharashtra has announced a 5-step unlock plan that will unfold from Monday. However, Mumbai's local trains, the densely populated city's lifeline, will not be operational. So while shops and offices are set to reopen, the working class is concerned about just how they're going to get to their workplaces. From Monday, Mumbai along with Maharashtra is preparing to unlock. Many shops, establishments, restaurants, hotels, offices will be opened. But in Mumbai, local trains will not run. Kamlesh Dave lives in Dahisar in North Mumbai and works in a garment shop 40 km away in Marine Lines, South Mumbai. Normally, he would take a train but will now have to take a state transport bus, which he says will take 3 hours one way. 6 घंटा लगता है ये पूरा 6 घंटा ये पूरा आधा दिन में जाता ही है आधा दिन में 2-3 घंटे में क्या 4 बजे तो बंद होता है फिर क्या काम होएगा कुछ काम होता नहीं है कहने का Not just Kamlesh, many who will have to use buses are worried. बहुत तकलीफ होती है 1-1.5 घंटा लाइन लगाओ फिर भी वेस्ट होता है टाइम फिर भी लेते नहीं हम लोग को ट्रेन से जाते ना ट्रेन से क्या उतना ही टाइम बचता है ना इधर 1 घंटा लगता है तो उधर आधा घंटा लगेगा ना टाइम बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है तो घर अभी कितना घंटा खड़े इधर Mumbai is in the level 3 of Maharashtra's unlock guidelines, which means private offices with 50% capacity can operate. BST buses, cabs, rickshaws can now apply, but not suburban trains. हम जब मुंबई और मुंबई के MMR रीजन की जब बात करते हैं और अनलॉक की बात करते हैं तो ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन
मुंबई लोकल को बंद करके अनलॉक की बात करना ये बेईमानी होगी। सरकार ने समझने की आवश्यकता है कि जब आप अनलॉक कर रहे हैं, उनके कार्यालय शुरू कर रहे हैं, उनके दुकानें शुरू कर रहे हैं, ऐसे में उन दुकानों में, उस कार्यालयों में काम करने वाला जो श्रमिक है, जो कामगार है, वो कैसे वहां तक पहुंचेगा। Shops, hotels and restaurants will also remain open till 4 p.m. So the Traders Association is worried about workers. महाराष्ट्र सरकार को हमने अपील की है, ट्रेन की सेवाएं शुरू कर जाए क्योंकि उससे बर्डन रास्ते पे कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा, बस के ऊपर बर्डन कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा और प्रिकॉशन भी अच्छी तरह से ले पाएंगे। As Mumbai prepares to unlock itself, Mumbai's lifeline, the local train, is still shut for common public. The government says it doesn't want to take any chance, but what about the commuters who will have to spend hours on roads, especially those in the entire Mumbai metropolitan region, before they actually reach their destination? In Mumbai, with camera person Rajendra Dayalkar, this is Purva Chitnis for NDTV. And staying with Mumbai, COVID has increased risks of heart attacks and strokes due to blood clots. But now there are cases of intestinal attacks also being reported in Mumbai. Several cases of gangrene in the intestine being seen in patients who have COVID. NDTV's Pooja Bhardwaj reports. COVID is causing blood clots not only in the heart but also in the intestine. Doctors in Mumbai say they are seeing several such cases. Dr. Abhijit Soni, an interventional radiologist associated with 5 major hospitals in Mumbai, says cases of intestinal clot and gangrene have increased almost 3 times in the second wave of COVID. गए साल से जब से कोविड चालू हुआ है तब से ब्लड क्लॉटिंग के वजह से इंटेस्टिनल इस्कीमिया, गैंग्रीन और इंटेस्टिनल क्लॉट के पेशेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी बढ़ चुकी है। पर मैं कह सकता हूँ कि जो हम नॉर्मली देखते थे उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा देख रहे हैं हम वो टाइप के पेशेंट्स। कोविड के वजह से बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है और जितना इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है उतना ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। Apart from the lungs, the coronavirus is also affecting the gastrointestinal tract according to doctors. Around 16 to 30% of COVID patients are facing such issues. These patients have less complaints of breathing and more complaints related to the stomach. In rare cases, COVID is also causing clots in the patient's intestine, which is called acute mesenteric ischemia or AMI. Due to AMI, the blood supply to the parts of the small intestine is affected, which leads to problem of gangrene. There are other symptoms like abdominal pain, hard stomach, diarrhea, vomiting along with fever, and in some cases there may be blood in stool or black stool. कोविड के समय में मेसेंटेरिक इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन को कम हो जाना और उसकी वजह से इंटेस्टाइन को डैमेज होना, ये एक कॉमन बीमारी हो गई है। इसका इंसिडेंसेस लास्ट ईयर कम था, लेकिन इस साल ऐसे पेशेंट काफ़ी सारे हम लोग देख पा रहे हैं। कोविड में ये कॉमन क्यों है? नॉर्मली जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप हो जाती है और वो रिएक्ट करती है। जैसे हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है वैसे हमारी क्लॉगुलेशन सिस्टम या जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं वो भी रिएक्ट करता है और पेशेंट जो है वो रेडी होता है एक्स्ट्रा क्लॉट करने के लिए। जब भी ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो हमारी बॉडी जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा रिएक्ट करते हुए सारे बॉडी में और नसों में वो क्लॉट कर सकता है। सिमिलरली वो मेसेंटेरिक इस्कीमिया मतलब इंटेस्टाइन की नसों में भी क्लॉट बनाने लगता है। If the symptoms of clotting in the intestine are diagnosed on time, then fatal problems like gangrene can be avoided, as COVID makes the situation worsen faster. पेट में दर्द है, इनको लूज मोशन है, इनको ब्लीडिंग हो रहा है स्टूल्स में, तो हम लोग ये देखते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब भी हमको लगता है कि पेट ज्यादा फूल गया है, पेशेंट स्टूल पास नहीं कर रहा है, उनको कंटिन्यूस फीवर रह रहा है, पेट में दर्द कम नहीं होता है, तो नॉर्मली हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें अपने को सीटी स्कैन पेट का बोलते हैं। तो सीटी स्कैन हमको ये बताता है कि कितना पार्ट गैंग्रीन हो चुका है। अगर गैंग्रीन सेट हो गया है तो उनको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ऑपरेशन करके वो गैंग्रीन पार्ट निकालना पड़ता है, सेप्टिक क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज जान का खतरा बन जाता है। रक्तवाहिनी जो आंत को सप्लाई करती है खून, वो रक्तवाहिनी के अंदर ब्लड क्लॉट जम जाना। अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसकी वजह से
जो खून मिलना चाहिए आंत को वो नहीं मिलता है और उसकी वजह से गैंग्रीन होने की संभावना ऐसे हो सकती है। तो जैसे क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, लोगों को स्ट्रोक आ सकता है, उसी तरह से ये जो समस्या है उसकी वजह से इंटेस्टिनल अटैक आ सकता है। तो अभी अभी सुनने में ज़्यादा आया है ये प्रॉब्लम के बारे में, पहले इतना कॉमनली नहीं था ये। In this complicated phase of COVID, experts say that unknown pain in the stomach means one should consult a doctor. If there are other problems like vomiting and diarrhea, after COVID, it could be the result of clotting, and this has been noticed in patients even after recovering from COVID. In Mumbai with Pooja Bhardwaj, Saurabh Gupta, Joshua Chin for NDTV. And in view of the increasing cases of corona, all religious places in Maharashtra have been closed for the last 2 months, and of course it's affected those who were dependent on them for their livelihood. And these people say they have no money left and there's no one helping out. हम अभी कांदा बटाटा बेचने का अभी 4-5 महीना हो गया, अभी बंद किया फिर से, फिर आम बेचने का, ऐसा थोड़ा थोड़ा कोई तो धंधा चालू रहने का, घर के बाहर चालू करने का। उसके बाद अभी कुछ भी ना, अभी बंद ही है सब। Vijay Jadhav, who's been selling idols, coconut and flowers outside Mumbai's famous Siddhivinayak temple for almost 21 years, has now started selling vegetables. With the 150 shops outside the Siddhivinayak temple shut since the first wave, the 600 families that the shop supported are now desperate. Rani Pawar has been selling flowers here since she was a child. Now she herself has 4 children and no employment. कोई तो हम लोग किसी से ब्याज से पैसा लेता है, घर भी चलाता है, अगर वो लोग नहीं देगा ना तो भीख मांगने को गया हम लोग। अच्छा, कितना ब्याज से पैसा लिया आपने? अब मेरे पे तो 1-2-3 लाख रुपया हो गया। अभी लाई कितने समय में 2-3 लाख रुपए? ये लॉकडाउन में। अच्छा, हाँ। और लाइट का क्या बोल रहे थे? तो 1 साल हो गया लाइट बिल नहीं भरा है। 4 kilometers away at the Mahim Dargah, Salim Rahman has had to shut his flower shop, which has been run by 4 generations of his family. हम लोग तो खोल के बैठे अभी चादर फूल जैसे लगा हुआ है, जब डेट हो जाती है, कोई डेट के लिए बॉडी के लिए चादर वगैरह लेके आता है, उन लोगों के लिए डाल के बैठे हैं अभी। और अभी धंधा तो दरगाह में तो नहीं के बराबर है। पहले यहाँ पे 4 लोग करते थे, अभी एक ही जन काम करता है बस। The market outside Bandra's famous Mount Mary Church is silent. The common complaint at all religious places in Mumbai, there's been no help from the government. With Suhit Mishra in Mumbai, Sarah Jacob, NDTV. We're going to go in for a short break. After that, why are 93 former civil servants so concerned that they have even written a letter to the Prime Minister? Stay tuned. Welcome back. Now, 93 former civil servants have written to Prime Minister Modi expressing concern over the newly proposed regulations in the Lakshadweep. They've also asked for the removal of Praful Patel as the administrator of the Union Territory. Sneha Merikoshi reports. Peaceful and serene Lakshadweep now in the center of a raging storm. Amid increasing demands for the removal of the Lakshadweep administrator Praful Patel, 93 retired top bureaucrats of the Constitutional Conduct Group have written to Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah and Environment Minister Prakash Javadekar, objecting to Praful Patel's draft orders that are pending approval of the Home Ministry. The bureaucrats say each of these draft regulations are part of a larger agenda that is against ethos of Lakshadweep. These measures smack not of development but of alien, arbitrary policy making. The proposals of the administrator without due consultation with the islanders are an onslaught on the fabric of Lakshadweep society. They want the draft regulations withdrawn and a full-time, people-sensitive, responsive administrator to be appointed. The letter that denies any political affiliation comes days after social media campaigns against the administrator. All the rights that we are enjoying as an islander was not provided by the administrator. It was provided by the democratic government under the Constitution of Government of India. What we are against is the draconian regulations introduced by the newly joined administrator, who fails to consider the rights of indigenous tribes and
fails to protect our belongings, our heritage, our culture, our habitat, or ecology. Elected parliamentarians of Kerala from the left and the Congress have protested against the alleged unilateral laws proposed by the administrator, even as their delegations have denied permits to visit Lakshadweep amid the pandemic. A unanimous resolution passed by the Kerala Assembly seeks for the removal of the administrator. Among the series of controversial draft orders being objected to are the powers of the administrator under the Lakshadweep Development Authority regulation to acquire land for development, the Lakshadweep Prevention of Anti-Social Activities Regulation or the Gunda Act in an island with a low crime rate, the Lakshadweep Animal Preservation Regulation which prohibits slaughter, consumption of bovine animals in an island where consumption of beef is seen as normal. It is clearly mentioned by and assured by the Home Minister that all proposals, after consulting the people, taking the opinion of the people, will be implemented. That means all the opinion and their suggestions will be considered. Well, the administration of Lakshadweep has gone ahead and backed these controversial draft orders as reforms. However, amid all the growing concerns, not only from people who belong to Lakshadweep but from different parts of India, there is yet to be any public statement either from the administrator of Lakshadweep or Government of India. Sneha Koshi for NDTV.